నమస్తే అండి. తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలకు నేను మీ శ్వేతారెడ్డి, బీజేపీ మహిళా నేత, చైర్పర్సన్ ఓం కళేష్ శక్తిపీఠ్ ట్రస్ట్ న్యూఢిల్లీ. నాతో ఉన్నారు డాక్టర్ అజయ్ మగన్. హీఈస్ ద ఇంటర్నేషనల్ స్పిరిచువల్ హీలర్. ఇక్కడ నేను హరిద్వార్లో ఉన్నాను. ఈ అజయ్ గారితో ఈ వీడియో చేయడానికి ఒక స్ట్రాంగెస్ట్ రీజన్, ఫస్ట్ వన్ దైవం అని చెప్పాలి. Because of God and because of spirituality, because of Hinduism, I've been reached Haridwar today because of that destiny, God made destiny. ఇక్కడ ఏంటంటే అజయ్ గారు, he's as I said in the earlier, స్పిరిచువల్ హీలర్. ఇప్పుడు మీకు పాజిటివ్ ఎనర్జీస్, నెగిటివ్ ఎనర్జీస్, కాస్మిక్ ఎనర్జీస్, ఈ ఫ్రీక్వెన్సీస్, ఇవన్నీ మధ్యకాలంలో మనం చాలా చూస్తున్నాము. బట్ హీఈస్ ద మోర్ ఎక్స్పర్టైజ్ ఇన్ హీలింగ్ యువర్ చక్రాస్, షెడ్ చక్రాస్ అని వింటున్నాము. మీరు ప్రొద్దున లేచినప్పటి నుంచి చూస్తున్నవే చాలామంది డాక్టర్స్, ఆయుర్వేదిక్ డాక్టర్స్ కానీ ఈ థెరపిస్టులు కానీ చెప్తున్నదే. బట్ హీఈస్ మచ్ ఎక్స్పర్టైజ్ ఇన్ దిస్ సబ్జెక్ట్ అనమాట. అసలు ఏంటి ఈ పాజిటివ్, నెగిటివ్, ఈ ఫ్రీక్వెన్సీస్, ఈ షట్చక్రాస్, చక్రాలు యాక్టివేట్ అవ్వడము, ఈ ఎనర్జీస్ని మానిటర్ చేయగలిగే గ్యాడ్జెట్స్, జియోపథిక్ స్ట్రెస్ అని, వాస్తు అని చాలా చూస్తున్నాం. ఎస్, దీస్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద యూనివర్స్ అని చెప్తున్నారు అజయ్ గారు. अब तक मैं तेलुगु में बोल दिया, तेलंगाना और आंध्रा लोग के लिए. अजय जी, please let me know about this international spiritual healing. So what is this healing? There are so many types of healings, as I know, but what is your healing and what is your specialization in the healing? Yeah, definitely. I welcome you all. This our sister, which is doing a wonderful job, a very beautiful job. I recommend it. I recommend her all the efforts. You see, spirituality and our India, and I will connect it to our BJP Supremo Modi ji. Very, very important aspect is, I can speak in Hindi and English as well. आपका मर्जी. Yeah, we are sitting at Haridwar. Haridwar is the gateway of Himalayas. Himalayas, when I say, different rishis, munis, sages. So spirituality flows from Himalayas, from our ancestors, from our rishi munis, and in the form of knowledge, in the form of sacred lifestyle, in the form of blessings. This is what we Indians inherit, which is our USP, our specialization. Unfortunately, in the last few decades, we missed this connect. ये जो नॉलेज है, ये जो ब्लेसिंग है, इसको हम डिस्कनेक्ट कर चुके थे. इसलिए बहुत नेगेटिविटी आई, फैमिलीज टूटना चालू हो गई, बच्चे बुजुर्गों का सम्मान करना भूल गए, रेस्पेक्ट करने का उनको बहुत सारी चीज़ें मिस कर गए, ट्रेडिशंस को मजाक बनाने लगे. और यहाँ पर आए मोदी जी, जिनके कारण से, जिनके एफर्ट के कारण से, इस बीजेपी के एफर्ट के कारण से जो सबसे अच्छा काम हुआ है, जो हमारी पहचान है वापस लौट रही है, हमारे मंदिरों का जीर्णोद्धार हो रहा है, इस कल्चर का पुनर्गठन हो रहा है, पुराने मुस्लिम नाम, पुरानी गलत इंफॉर्मेशन एजुकेशन सिस्टम से हट रही है, और ये सब चीज़ें स्पिरिचुअलिटी को एनहांस करने के लिए है. सो फॉर अ बेटर सोसाइटी, फॉर अ बेटर वर्ल्ड, फॉर अ ग्लोबल पीस, दिस इज utmost recommendable thing which Modi ji is doing. So माँ गंगा और पूरा हिमालय उनको ब्लेसिंग्स दे रहा है. और लेट मी टेल यू, मोदी जी इज अ स्पिरिचुअल हीलर, मोदी जी इज अ स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, एंड दिस स्पिरिचुअलिटी is actually a very deep science. I have also acquired a little bit of knowledge of this. मैं 25 to 30,000 फैमिलीज का आज तक
हीलिंग कर चुका हूँ। मेरे हीलिंग से क्या होता है? आई कनेक्ट यू टू यूनिवर्सल एनर्जीज. दिस सब्जेक्ट कम्स इन टू मेटाफिजिक्स. सो आवर लाइफ, वी ह्यूमन बींग्स, आवर लाइफ इज बींग गवर्नड बाय ऑरा. इट इज एन इनविजिबल कॉस्मिक सेफ्टी शील्ड. प्रकृति का सुरक्षा कवच. एंड ह्यूमन बींग इज अ शेप ऑफ एनर्जी made in golden ratio. So in golden ratio, it means we are the most powerful shape of this universe. Why not to utilize it in the best way? Why not to use it in the most positive way? For global peace, for inner happiness, for outer happiness. What is spiritual science? It is simple harmony of inner and outer energies. Connectivity of cosmos, this पूरा ब्रह्मांड and ourselves. ये कैसे आप कर सकते हैं? If you understand the significance of aura, the significance of chakras, and the significance of cosmic connect, which we are missing. So I always say my favorite subject is, you are using human intelligence, you are using artificial intelligence, you should become cosmic intelligent also. Start using cosmic intelligence. Great, and what great. will happen? You will get smooth success. You will get inner happiness. You will get good sleep. You will get 100% stress free life. Stressless life. Stress free life. Stress free life. Okay. And whatever your ambitions are, you will be achieving success without much of the obstacles. Okay. So because universal energies will make your life better. So always look at these subjects. You should know how your aura is. You should know how your chakras are moving. Nowadays even kids are also knowing about maths, chemistry, physics and everything. But kids के साथ अभी adults भी सीखना है ये कॉस्मिक सब्जेक्ट के बारे में, ये हीलिंग के बारे में. In fact, I have made a few small capsules, very small capsules, which have practical impact in your lifestyle. Okay. So there are certain techniques in the further coming interviews. Every interview I will introduce one good technique. Okay. And now let me introduce All is Clay Foundation. Starting from Netherlands. Yeah. Our Guruji. हिमगिरी गुरुजी के बारे में बोलना है. Yeah. Himguru Because Guruji. he is the captain of the project. जी. So this concept is ultimate concept. All is clay, which is the final destination. सब कुछ मिट्टी है. मिट्टी है. अगर आप हिंदू हैं तो जलाए जाएंगे, अगर आप मुस्लिम हैं तो दफनाए जाएंगे, क्रिश्चियन है तो वैसे होंगे, बट अल्टीमेटली सब कुछ मिट्टी है, सब कुछ मिट्टी हो जाना है. अगर सब मिट्टी होना है तो हम क्यों नहीं अपने लाइफ को फॉर अ बिगर पर्पस, फॉर अ बेटर पर्पस यूटिलाइज करें. सो फॉर दिस पर्पस ऑल इज क्ले फाउंडेशन हैज बीन मेड. मिट्टी से क्या बनते, दैट मैटर्स अ लॉट. सो जो सब्जेक्ट्स आज की डेट में पूरे सोसाइटी के लिए इंटरनेशनली इम्पैक्टफुल हैं, वो सब्जेक्ट्स को हम कवर करने जा रहे हैं. द बेसिक सब्जेक्ट इज नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में आना, झगड़े से, टेररिज्म से ग्लोबल पीस में आना, और स्ट्रेस से इनर हैप्पीनेस में आना, और सर्विस में आना, सेल्फिशनेस से सर्विस में आना, लेने की जगह देने का भाव रखना. So this is all about All is Clay Foundation. Yes. I'm so happy, so delighted. Thank you, sister. You are so beautiful. Thank you, Bhaiya. Thank you so much for giving your God bless wonderful you all. time. We need your blessings. And your support. definitely, it's all about ईश्वर And का. my all हरिद्वार में services जो are for vibrations है, everyone, yeah? हरिद्वार में जो vibrations है, once I landed Dehradun, I highly got vibrated with the spiritual touch. एंड दिस इज हम बोलते हैं ना, ये देवभूमि, देवभूमि बोलते हैं ना. सो हरिद्वार में इतना पावर है, और ये हमारे इंडियन स्पिरिचुअलिटी और हिंदू धर्म में भी वो पावर है. गंगा में वो पावर है, हमारा हनुमान जी का विग्रह में वो पावर है. पूरा 5 एलिमेंट्स बोलते हैं ना, पंचभूत में भी ये पावर है. ये पावर से हम बहुत बड़ा चीज बनना चाहते हैं हम लोग, थ्रू
ऑल इज क्लियर द्वारा। एक में लास्ट चीज, आप लोग जितने भी लोग देख रहे हैं, हु एवर इज वॉचिंग एंड इज कनेक्टेड राइट नाउ, just 20 seconds, close your eyes and listen to what I am saying, because I am going to transmit these positive vibrations through our video to you all. Yeah. So just close your eyes, so you also close your eyes and inhale deeply, exhale deeply, inhale freshness, exhale all your stress, relax your body, relax your mind, put an intention that you are going to receive very powerful healing energies from the universe. Just now, your life is going to become extraordinary, happy, and relaxed. Enjoy this moment. धन्यवाद दीजिए परमात्मा का. Give thanks to the universal energies. Give thanks to the God that you are the most fortunate people who are getting these universal energies for your betterment. इस पल से आप पॉजिटिविटी में रहेंगे. डिलीट all the negativity which is in your mind. Delete your past. Live life with gratitude. So pay your gratitude to this cosmos, these energies, this nature of which we are a integral part. Stay happy, stay blessed. You are the most powerful energy of this universe. आप बीमार नहीं हो सकते. आप फिजिकल बीमारी, मेंटल बीमारी, रिलेशनशिप का बीमारी, सक्सेस ना होने का बीमारी, इन सब बीमारी से दूर हो गए. डिलीट ऑल डिजीज, रिलीज ऑल स्ट्रेस, release all negativity, and welcome to the world of all is clay, the positive world of healthy, happy, global peace and harmony. Thank you. Thank you Hari Om. so much. जय बीजेपी, जय मोदी, जय हिंदू धर्म. नाना जी, आपको कैसा लगा मुझे ये काफी- ट्रीटमेंट होने के बाद? जो पहले मैं महसूस कर रहा था, उसके बाद जब गुरुजी ने ये चीजें मुझे कराई और इसका मुझे कराया, तो अब मैं बहुत एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ. मेरी बॉडी काफी रिलैक्स फील कर रही है. ऐसा लग रहा है कि माइंड से जो नेगेटिविटी थी वो सारी जैसे बिल्कुल जा चुकी है, और एक अलग ही हैप्पीनेस, अलग ही एक अंदर एनर्जी बूस्ट महसूस कर रहा हूँ मैं. और बहुत अच्छा लगा गुरुजी ने जो ये मुझे आभास कराया, बहुत अच्छा लगा. Let me just explain what exactly it is. See, I have just harmonized the जो चीजें energies. बताई है इन्होंने बॉडी के बारे में, जो गुरुजी ने बताई है, वो 99% बिल्कुल करेक्ट बताई है. और ये चीजें जो यहाँ से लेके नीचे तक इन्होंने, क्या क्या बोला डॉक्टर जी? डॉक्टर जी ने बोला कि आपका जो माइंड है वो सही वर्क काम करता है, और यहाँ पे आके जो प्रॉब्लम्स है रिलेशन में, आपके दुश्मन बहुत है, ये भी फैक्ट है. ये दुश्मन काफी है, पर बोल रहे हैं गुरुजी की आपकी जो आप उनसे बच जाते हैं. इनका ये वाला चक्र बिल्कुल बढ़िया चलता है. तो एंजल ब्लेसिंग, नेचर सपोर्ट्स, कुछ भी होगा ही नहीं इस आदमी को, पहले ही नेचर इनको दूर ले जाएगा जी. ऐसा हुआ भी तो होगा. बिल्कुल इन्होंने बिल्कुल ट्रू बताई है, बिल्कुल ट्रू. इनके फैक्ट जो है वो बिल्कुल ट्रू मुझे